Talking about the symbols, now by definition it is the abbreviation for the full name of an element. ठीक है, symbols कैसे दिए scientist ने? For example, hydrogen has a symbol H, carbon has C, calcium has Ca, by the way ये Ca है, correct the mistake, and then we have unil hexaneum UNH. Now some elements have symbols for the Latin names. Why? Because sodium was also called natrium in Latin, तो हमने उसको Na का नाम दे दिया. Iron को हम ferrum कहते थे. They were given the symbol of Fe. Same is as potassium known as scalium, lead as plumberm, gold as aurum, and mercury as hydrogen. तो उसको हमने Hg का symbol दे दिया था. Then we have valency, the combining ability of an atom with another atom. Valency क्या होता है? Now we have various definitions of valency. Valency हम कहते हैं ना कि valence electrons कितने हैं, valence shell क्या है, valence का मतलब क्या होता है last, valence shell outermost shell, valence electrons the outermost electrons जो सबसे बाहर है. Now on the basis of ionic bond definition, क्योंकि valency का काम ज्यादा ionic bonds और covalent bonds में आता है. Now अगर हम ionic bonds की बात करें, पहले तो what are ionic bonds, we will be studying this in the later chapters in detail. Ionic bonds are basically the bonds formed between metals and non-metals. Whereas when we talk about covalent bond, covalent bonds are formed between non-metal and non-metal. Now the valency, the number of electrons gained or lost by an atom. Ionic bonding, we have a metal and we have a non-metal. We know that the metal will always lose electron, the non-metal will always gain electron. अब साथ जो भी इसके नंबर आएगा, यहाँ +2 हो, for example यहाँ -3 हो, this would be known as a valency in terms of ionic bonding. ये जो charge होगा, for example sodium losing 1 electron would having a +1 valency. Chlorine gaining 1 electron would get a -1 valency. तो +1 और -1 को हम कहते हैं monovalent. Whereas let's say calcium being in group 2 loses 2 electrons and oxygen being in group number 6 gains 2 electrons. So 2 plus and 2 minus are known as divalency. ये आपके पास divalent elements हो जाएंगे. Now same is the case with the other one. When we talk about on the basis of covalent bond definition, the number of covalent bonds formed by an atom. अब वो atom जितने covalent bond बना सकता है उसकी वो valency होगी. तो ionic bond जब हम व्यू से देखेंगे तो valency would be the charge by gaining or losing. जो element का charge आया उसकी valency होगी. +1 है और -1 है तो वो monovalent है. +2 या -2 है तो वो divalent है. But covalent bond में क्या मतलब है इसका? The number of covalent bonds formed by an atom would be its valency. Ionic bonding में क्या था? Number of electrons gained या जो charge है वही valency है. Covalent bond में number of bonds are the valency. जैसे कि ऑक्सीजन की आवाज outermost shell में 2 electrons होते हैं, तो वो क्या करेगा? उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मतलब कि वो 2 बॉन्ड बना सकता है. कार्बन बीइंग इन ग्रुप नंबर 4 को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 बॉन्ड बनाएगा. क्लोरीन बीइंग इन ग्रुप नंबर 7 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 बॉन्ड बनाएगा. नाइट्रोजन बीइंग इन ग्रुप नंबर 5 नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो 3 बॉन्ड बनाएगा. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर एटम वुड बी इट्स वैलेंसी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम डेफिनेशन अगर देखें, the number of hydrogen atom bonded to any other atom भी हम by default as a comparative control ले लेते हैं. लेकिन you should know कि valency in terms of ionic bonding charge, in terms of covalent bonding number of bonds है.